उद्योग चैंटिंग धर्माच्या फुला आप शाम के टाइम इतनी गर्मी पर्दा हटा रोशनी आ रही हवा आ गई इसी चले चैंटिंग करके खंड परित गवा हाँ ಈ ಗಾಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾರು Tadevocum Connected to OnePlus 3G.
Nasıl ya? Tamam çalayım. Çölüm. क्या बात जाम करो ना. कोशिश करने की बात है.
Bhagava Arahant Samma Sambuddho Sakato Ena Bhagavata Dhammo Supatipanno Yassa Bhagavato Savaka Sangho Tamayang Bhagavantam Tadhammang Sasangham Imehi Sakare Iyatarahan Aropitehi Jayama Sadhuno Bhante Bhagava Suchira Parinibhutopi Pachima Janatanukam Manasa Ime Sakare Dungata Bhute Patiganatu Amhakam Digaratam Hitaya Sukhaya Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Nandmayam Buddhasya Bhagavato Ubbhag Namakaram Karumasi Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Arahato Samma Sambuddhassa Hanmayam Buddhanusakinayam Karomasi Anggopan Bhagavantang Evang Kalyano Kiti Saddo Abhugato Iti Piso Bhagava Arahan Samma Sambuddho Vijjacharana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadhammasa Satta Deva Manussana Buddho Bhagavati Handmayam Buddhavigitim Karomasi Buddhavara Antavartadi Gunabhiyuto Yodha Vijnana Karuna Isamagatato Bodhesiyo Sujanatam Kamalam Basuro Vandamiham Tamaranam Sirsajinendam Buddhoyo Sabbapaninam Saranam Kemamuttamam Paඨamanusatittanam Vandabhitam Sirenam Buddhasasmidasova Buddho me sami kesaro Buddhasaham niyademi Sariran jivitan chidam Vandantoham charisami Buddhaseva subodhitam Nati me saranang anyang Taddo me saranang varan
प्रीतेन सज्जवज्जेन वड्डेऽहं सत्तुशासने बुद्धं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतं विदधाति तब्बेऽपि अन्तरायामि माहेशुं तस्य तेजसा बुद्धिकुकम्मं पक्टमयायं पटिगनाथो चैन्तं कालान्तरे संवरितुमबद्धे अन्मयं धम्मानुसतिनयं करुणसे गतो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको पनैको पश्चत्तं वेदितव्यो विඤ्ඤोहीति अन्मयं धम्माभिगीतिं करोमसि स्वाखाततादि गुणयोगवशेन सेयो यो मग्गपाकपर्यतिविमोकवेदो धम्मो कुलोकपटना तदधारी धारी वन्दाम्यहं तमरन् वरधम्ममेतं धम्मो यो सर्वपाणिनं शरणं केममुत्तमम् तुतीयानुसतिट्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं धम्मस्सस्मिदासो धम्मो मे साङ्गिकीसरो धम्मस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि धम्मस्यैव सुधम्मतं नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन वच्चेन वड्डेयं सत्तुशासने धम्मं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतं विदधाति सब्बेऽपि अन्तरायामि माहेशुं तस्य तेजसा कायेन वाचा वाचेच्छा धम्मो पटिगनाथो चैन्तं कालान्तरे संवरितुमतम् अन्मयं सङ्घानुसतिनयं करोमसि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुङ्गला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो तरं पुण्यकेतं लोकसाति अन्मयं सङ्घाभिगीतिं करोमसि मजो सुपटिपत्तिगुणाधियुतो यो अष्टविधो हरियपुङ्गलसङ्गसेठो शीलादिधम्मपवरा सयकायचित्तो
वन्दाम्यहं तमर्या निगनं सुशुद्धं सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमं ततीयानुसतिष्ठान वन्दामि तं शिरेणहं सङ्गस्सस्मि दासो सङ्गो मे सामिकेसरो सङ्गस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि सङ्गस्यैव शुभमतं नास्ति मे शरणं अन्यं शरणं वरं एतेन तश्च वज्रेण सज्जेयं सत्तु शासनी सङ्गं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतं इदा सब्बेऽपि अन्तरायामि माहेषुं तस्य ते कायेन वाचा वचसा संगो पटिगनाथुच्चेतो कालान्तरे हम खंड परित्ता पाठ सुनेंगे करेंगे। විරූපක්ඛේහි මේ මෙත්තං මෙත්තං ඒරාපතේහි මේ චබ්බ්‍යා පුත්තේහි මේ මෙත්තං මෙත්තං කන්හා ගෝතම කේහිච අපාදකේහි මේ මෙත්තං මෙත්තං දිපාදකේහි මේ චතුප්පදේහි මේ මෙත්තං මෙත්තං බහුපදේහි මේ මාමං අපාදකෝ හිංසි මං හිංසි දිපාදකෝ මං චතුප්පදෝ හිංසි මං හිංසි බහුපදෝ සබ්බේ සත්තා සබ්බේ පානා සබ්බේ භූතාච කේවලා සබ්බේ භද්‍රානි පස්සන්තු මා කංචි පාප මාගමා අප්පමානෝ බුද්ධෝ අප්පමානෝ ධම්මෝ අප්පමානෝ සංඝෝ අමානවන්තානි සිරින්සපානි අහිවිච්චිකා සතපදි උන්නානාභි සරබු මූසිකා කතාමේ රක්ඛා කතාමේ පරිත්තා පටික්කමන්තු භූතානි සෝහං නමෝ භගවතෝ නමෝ සත්තන්නං සම්මා සම්බුද්ධානං තී ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්ථිතේ හෝතු සම්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්ථි මේ හෝතු සම්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්ථිතේ හෝතු สั සම්බදා มปดา සම්බදා เอเตนะสัจจวัจเจนะสุทธิเตโหตุสัมปดา ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්ථි මේ හෝතු සම්බදා   สัมปดา සම්බදා
We'll now listen to discourse by Lungpur Pasanno titled The Underlying Radiance of the Mind. जो मन के बेसिक चमक है उसकी क्षमता है शुद्ध चित्त की. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ Dhammāṃ Saṅghāṃ Namasāmi. Okay, so it's Saturday night, mid-May. Sitting meditation to the sound of rain. It's wonderful. We haven't been getting much rain this year, so having some rain come in and wetting things down a bit, soaking the forest a bit. It's a good thing. Something that has stuck in my mind this past week. I listened to a talk of Ajahn Menindo's, and he was talking in terms of different approaches to practice, different approaches to, of course, to world view or self-view, but particularly in terms of practice, but in the sense of, and I thought it was really quite interesting and worthy of ongoing reflection, and in particular this is pointing to as like a goal-oriented practice and source-oriented practice, and that we, most of us, coming from our cultural backgrounds, tend to be focused more on goals and so that our, and of course that shapes our worldview or self-view, and so that working towards
a goal, having to have a goal, which is then, in order to get to that goal, then we have to get rid of things that are the obstacles to that goal. And but it comes with a package as well, in the sense of there's like a goal outside of us that we are trying to work towards, and but also it also the knock-on effect is that we also feel that somehow we are lacking, we're missing something, we're or even flawed, damaged in some way, and trying to get to some kind of perfection somewhere, sometime, somewhere else. And that, of course, it keeps us busy for our whole life, but it doesn't lead to much contentment or satisfaction or even a whole lot of well-being, in that we tend to be chasing after something, which is then, of course, that's an object of desire, or we are thwarted or hampered in some way, and so then there must be something to blame, somebody to blame, look for something to blame, and so that that externalizing of what are objects of gratification or of aversion and dissatisfaction. So it keeps us off balance. And his emphasis on say a source-oriented practice, in that there is is a reality, or is a truth, or that is experienceable here and now, in a sense, in a even when we chant the qualities of the Dhamma, sandhitiko, so apparent here and now. This is a here and now Dhamma. It's timeless, akaliko. Of course, it's investigating, it's encouraging investigation. But it's also to be experienced for each wise person themselves. I would say somewhat different approach. I mean, Buddhism is a very different approach. I think it's also something that has puzzled Western minds for a long time. And then
even for ourselves who are inspired by the teachings, inspired by the practice. I think it's important to be reflecting on how our own cultural conditioning can be affecting us and creating obstacles and problems for ourselves, and not maybe not be noticed so clearly, not recognized so clearly. And of course, it's not black and white. It's not hard and fixed. But it is I think it's worthy of investigation, and seeing how we can reflect, investigate, reconsider our practice, because of course this practice is for the overcoming of suffering, is for the overcoming of dukkha in all of its kind of shades of this, from stress, minor stress, to major despair, and everything in between. So to recognize how, and it isn't as if there aren't any obstacles to overcome, or that, but it's like the way the Buddha expresses it the mind radiant bhikkhus is this mind, but it is defiled or corrupted by passing defilements, incoming defilements, akanduka, visitors. Akanduka in Pali is like a visitor. Like we have in the Vinaya, we have duties that we have to perform toward visitors, akanduka, those coming into the monastery. We have to receive people properly. We have to of course, with our minds, we have to receive the visitors to our mind properly as well, and to be wisdom and discernment and understanding is so essential. But it's also important to say there is this underlying radiance or nature of the mind. Some of the images that, the Buddha himself used the image of water, and of course the great teachers use that as well in terms of the. It's just water is its basic nature is pure. It's just H2O, but then it can be colored, it can be turbid, it can be mixed with all sorts of things that make it less than pure, and the mind is like that. It is this. So it's like learning how to come back to the source, or to
recognize the source, learning how to appreciate that source of fundamental nature of the mind. And learning how to attend to that. And also just in terms of how we conceive that. Because it does, we end up conceiving of ourselves and the world around us in certain ways, and that's just through our cultural, religious, philosophical conditioning. So of course, one of the striking examples, and I've mentioned it many times over the years, of the king of Thailand being interviewed for a BBC documentary. This is a long time ago, late 1970s, and the interviewer has been. There was an extensive documentary, a 3-hour documentary or something, and they followed the royal family around, and of course the king is actually, or the former king, was a devout Buddhist, and he is considered the patron of the sangha, patron of the, say, religion. And the interviewer asked, how it was sort of like considering, because he was having trouble with some of the ideas around Buddhism and how do they conceive of original sin, and the king looked very puzzled, and he was sort of like, oh, I was saying, for Buddhists, they don't really think in terms of original sin. You think more in terms of original purity. That's a whole different ballgame. It's a whole different worldview. It's a whole different self-view. So that, the source is something worth coming back to, rather than conceiving of a goal to get away from something. So it's really, how do we conceive of ourselves? I mean, it isn't as if Buddhists and Buddhist practice is completely goalless and has no motivation. But I think you free up a lot of energy and motivation if you're not entangling yourself in a conception of yourself as flawed, damaged, lacking, less than. And of course these are, all the teachings are for investigation, for contemplation. How do we use them? How do we pick them up? And
certainly the way that the Buddha taught and emphasized. It was always in terms of it was always returning to the experience and the experiential realm of dukkha, freedom from dukkha. That's the. It's not a. It's not a concept. It's not a belief. You don't have to believe in dukkha. You have to pay attention and figure out what's this experience and how do I free the heart from this discontent and dissatisfaction, this dis-ease, how to approach a sense of settling. And of course, there are also those incoming defilements or incoming corruptions, passing corruptions. They don't just sort of flit in and flit out. They flit in and then they hang around and make a home for themselves, and we tend to entertain them, look after them, cherish them. We get used to them, and there are companions. What would I do without my defilements? It's hard to conceive. It's hard to figure it out. I mean, it's one of the things you notice that when you're we start meditating. We want to be peaceful, and you have to work at it, and then the mind settles, and then how long does it settle before the mind's looking for something to it's not, it doesn't sort of stay that way. We start looking for something else to do, look for something that we're kind of irritated about, or we this is wrong, I have to get has to be dealt with. I got to. This is, So we're those cycles of desire and aversion and confusion just keep cycling through. So that and one needs to have that clarity of heart that understands it, sees it clearly, works skillfully with the antidotes, with the wearing them away, with releasing and letting go. But in the end, it's also, say, another image that is used, is like the sun or the moon coming out from behind the clouds, and it's like, the sun, the moon, they were always, bright and radiant, but the clouds obscure. That we can return to that, or we can recognize that. We can, not be disheartened because there are clouds. I mean,
So that the perspective is so important. And then again, the how we work with it, that source-oriented practice. One of the kind of mainstays of the forest tradition in Thailand in terms of practice, and particularly Ajahn Mun's teaching and emphasis, and he influenced so many teachers up to the present day, including Ajahn Chah, and where Ajahn Mun emphasized that one of the really important things to be attending to is to be able to recognize the difference between the mind or the heart, citta, and the conditions of the mind, the objects of the mind, the moods of the mind, and the citta and the akan kong chit, the citta and the moods of the mind, the arom kong chit. So it's something that a perspective that very powerfully influenced the obviously there's an insight of Ajahn Mun's, but that had influenced his students and his heirs to the Dhamma. That to be able to recognize there is this citta, this heart, this that its nature is to be awake, to be present, to be clear, to be still, to be radiant, and has that capacity, or it has that potential. But it's those conditions of mind, objects of mind, moods of mind that complicate it or obscure it. To turning attention to that, recognize, because we can justify our moods, we can justify our conditions of mind. We can have any number of reasons to be upset at any particular time. We can have all sorts of logic to say why you need this pint of ice cream right now. I mean, any object of desire is we're not that discriminating. We'll take any object really, but this is how that works. And then, of course, the aspects of greed, hatred, delusion. Delusion plays itself out in fear and anxiety and confusion, in views and opinions, and of course we can back it all up with logic, and it can be all it can be either irrational or rational. It doesn't really matter, just so long as the object is there, and we keep propping it up. But that's Ajahn Mun's emphasis. That's as one who is seeking this path to learn how to see the difference between
the citta and the objects of mind, conditions of mind. And because liberation is not in the conditions of mind, it's not in the moods of the mind, we have to return to the citta itself. And of course, that's one of Ajahn Mun's senior disciples. That was, I think, one of his great contributions, is that Lumpur the reformulating of the Four Noble Truths, the way he kind of reformulated, recast it in his teaching, where they switching the first and second Noble Truth and third and fourth Noble Truth, so that it's sort of the origin of suffering, and in suffering, path leading to cessation of suffering, and the cessation of suffering. And where he said that it's like and it's put quite fast, say the mind going outside is the origin of dukkha, and the result of the mind going outside is dukkha, and the mind seeing the mind is the path leading to the cessation of dukkha. The result of the mind seeing the mind is the cessation of dukkha, the ending of dukkha. So it's very simple and practical, but something that needs to be reflected on, worked with, understand. So that I think that in Thai it's Jit Song Nok. It's very simple, but it has this, the mind, the citta, or the heart, citta, just going out. Of course, it's when it goes out of itself, it's looking for something, or it's looking for something to gratify, or it's looking at something that is objectifying, reifying an object of aversion, an object of fear, an object of doubt, and so that going out, moving out of its source, moving out of its foundation, moving out of its true nature, its intrinsic nature. So, but whenever it does that, say the result of the heart going outside, that is dukkha. And it isn't as if, say, practicing with him, it doesn't mean that one doesn't acknowledge or recognize. It's not a negation of the world, because that in itself is going out. But it's just seeing things in their true nature, seeing how things work, but everything is held within this the heart of clarity, the heart of awakening. So that, and it says they say the antidote is not, like say that the cause of suffering is the heart going outside, but it's say jit hen jit, the mind, the heart, seeing the heart is the
that is the cessation. It's not stopping the mind going, so forcing the mind to stay. Because even that conception of outside, inside is already going out. And it's moving towards something that is not there. But it's just this, the heart seeing itself and seeing that it's like this citta is radiant. Papasara middang bhikkhave cittang. So that's the Buddha saying. The mind, bhikkhus, is radiant. It's such a a simple statement, hardly even a sentence. But then, and the reality is, of course, is that there's how many volumes of the Tripitaka to sort of here's the way. This is the way it works. This is the way to work with things. This is so. It's it's holding it skillfully, but it's so important to have that. That's where sammaditthi, right view, is essential. That's the beginning of the path. Is that right view. I think also that aspect of faith in Buddha, Dhamma, and Sangha is such a important resource, important foundation, and particularly, as we conceive of again from our backgrounds, faith is. We don't have faith easily, but I think it's also to be like in the English language and English concept, like faith and belief are synonymous, but say particularly from a Buddhist perspective, belief is you have a conceptualizing something, that you prop up something that you're trying to believe in. Whereas faith is more like trust, saddha, it's really trust or confidence, much more of a heart quality. And so that there's that sense of confidence in that. There's a confidence in. And the Buddha as an awakened being, somebody who truly understood the nature of this human existence and freed himself. But then, confidence in the Dhamma, trust in that. This teaching is well expounded. It is. It's apparent here and now. This is a here and now Dhamma. It's something that sanditthika Dhamma. Okay, it's something that can be experienced. It's a timeless teaching. Yeah. Things were impermanent, unsatisfactory, and not self in the time of the Buddha, and they're that way now. They'll be that way in another 2,600 years. It'll still be impermanent, unsatisfactory, and not self. This is a timeless teaching, and the nature of the heart, of its fundamental nature, this is timeless.
but it's to be experienced for each wise person themselves. So that sense of confidence, of faith, that's to be inclining to. It isn't something to be believed in and clung to, but it's a strength, like a bala, or a source of strength that is to be turned to, encouraged, opening to. When we try to prop up to a belief, then it's more conceptual, and concepts are it's easy to shoot holes in concepts, and that's and it's not really helpful. But when you're turning to the things that nurture this quality of trust, of confidence, because it does take a certain steadiness and stability to really recognize and gain confidence in this awakened possibility of the human heart, the citta. Is to be able to gain confidence in this sense of this citta being radiant. We can find all sorts of evidence for it's the opposite, but what is its radiance? In the same way, you water is, nature of water is pure, but you wouldn't go around drinking from the as it's running down the driveway. I mean, it's just it's dirty. It's not suitable. Or even our well and our spring are pretty great sources of water, but we still filter it and soften it and shoot it with ozone and makes it really appropriate for drinking. So that you still have to work with it. So that this working with the mind, but paying attention to how we conceive of the mind, conceive of practice, conceive of self, conceive of the world. And I think that aspect of goal-oriented and source-oriented is a helpful tool. Anyway, it got me thinking a lot. I'll offer that for reflection this evening. Sadhu, 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 anumodam.
देशना का संक्षेप में अनुवाद करते हैं। तो लोग प्रोफेसर ने शुरुआत की कि उन्होंने हाल ही में कुछ टॉक सुनी थी अजान मनिंदो की शायद, जिसमें जो हमने भी पहले सुन चुके हैं, गोल ओरिएंटेड और सोर्स ओरिएंटेड प्रैक्टिस के बारे में। तो उसी के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही है और इसके ऊपर हमें निरंतर विवेचन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जो हमारी सामान्यता जो हमारा कंडीशनिंग है, कल्चरल कंडीशनिंग, वो यही है कि हमारे कुछ गोल होने चाहिए और उस गोल के हिसाब से हमको काम करना चाहिए और उस गोल को पूरा करने में जो आप बाधाएं हैं उनको हटाना चाहिए और तभी हम जाके उस गोल को पहुंच सकते हैं। क्योंकि अभी हम परफेक्ट नहीं हैं, अभी तो हमें कमियां हैं, कमियां हटाएंगे तो हम परफेक्ट हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ऐसा मान्यता हमारे सामान्य जीवन में भी है और साधना के माध्यम में भी ये मान्यता रहती है। तो कि इसके अपने लाभ भी हैं लेकिन नुकसान भी काफ़ी हैं कि हम हमेशा डिसकंटेंटेड रहते हैं, हमेशा हमको सेटिस्फेक्शन कभी नहीं रहती। लगता अभी भी विकार बहुत भरे पड़े हैं, अभी भी बहुत विकार हैं और हम कुछ चीज़ को चेज़ करते रह रहे हैं जो भविष्य में कभी मिलेगी, मेहनत करेंगे तो होगी, अभी तो हमें मालूम ही नहीं वो क्या है। तो ये भाव रहता है और उसमें मैं का भाव हमेशा बढ़ा ही रहता है, बनता ही जाता है मैं का भाव। इसके विपरीत जो दूसरा एटीट्यूड है साधना करने का, जैसे सोर्स ओरिएंटेड कहा अजान मनिंदो ने, तो उसमें इस बात पे महत्व दिया जाता है कि एक सत्य है जो कि अभी उपलब्ध है और उसको अभी अनुभव किया जा सकता है। जैसे धम्म की जो हम व्याख्या सुनते हैं, संदिट्ठिको, अकालिको, यही पस्सिको, उसका मतलब है कि वो यहीं इस समय उपलब्ध है। और अकालिक है, टाइमलेस है, टाइमलेस है तो हर समय उपलब्ध है। यही पस्सिको है तो हमको बुला रहा है कि आओ देखो। तो ये इस बात को अगर हम हृदयंगम करें तो हम, और भगवान की शिक्षा में भी आती है बात, पभस्सरो हम चित्ता, चित्त जो है उसका बेसिक स्वरूप तो शुद्ध है, रेडियंट है। तो ये एक दूसरी तरह की अप्रोच हो जाती है साधना के प्रति। और जब इस पर विवेचन करते हैं तो पता चलता है किस तरह से हमारी कल्चरल कंडीशनिंग जो है गोल ओरिएंटेड काम करने की, वो एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती है और ये बात स्पष्ट होने लगती है। तो मलमपुर प्रसन्न कहते हैं कि हमको इसके बारे में अच्छी तरह से विवेचन करने की आवश्यकता है। जो भी हम जिस तरह से भी साधना कर रहे हैं उसको समझना चाहिए कि साधना का उद्देश्य दुख मुक्ति है, हर तरह के दुख, सब छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़ा दुख। तो अगर साधना करते हुए हमें दुख होता जा रहा है तो उसको हमको विचार करना चाहिए कि क्या कारण है। तो उन्होंने फिर वही बात का, भगवान की जो शिक्षा है कि चित्त जो है अपने में चमकदार है, रेडियंट है, प्रभास्वरो अब चित्त कहा जाता है। और उसमें जो विकार हैं वो आगंतुक है, वहाँ पे शब्द पाली में भी इस्तेमाल हुआ आगंतुक है। तो आगंतुक को हम समझते हैं हिंदी में जो गेस्ट की तरह आते हैं और हम उनको अप्रोप्रिएटली रिसीव नहीं करते और वो हमारे यहाँ ठहर जाते हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि विनय में भी हमें सिखाया जाता है कि गेस्ट जब आए तो कैसे रिसीव करना है। तो हमको इसी तरह से अपने जो विकार मन में आते हैं कभी कभी, उनको उसी तरह से सती और पन्या के साथ रिसीव करना चाहिए, ताकि हम ये बात समझें कि जो चित्त का स्वरूप है, बेसिक अंडरलाइंग शुद्धता का, उसको न भूलें। तो उन्होंने बताया कि भगवान ने भी कई इमेजेस यूज़ किए उसको समझाने के लिए कि जैसे पानी है, पानी बेसिकली शुद्ध है, उसमें गंदगी मिल जाए तो वो गंदा हो जाता है, और लेकिन वो पानी का स्वरूप जो है उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होता है। हाँ, उसको पी नहीं सकते, उसको साफ़ करना पड़ेगा, लेकिन रहता तो वो पानी ही है, गंदा पानी हो जाता है। तो मन भी इसी तरह से है, उसकी बेसिक स्रोत जो है वो तो शुद्ध है, लेकिन आगंतुक जो आ गई उसमें विकार आ गए, उसके कारण बेचैन हो करता है, हमको परेशान करता है। और इस बात को हमको साधना में ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी सोर्स जो है शुद्ध है, हमें कहीं और जाना नहीं है, हमें
शुद्धता लेने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जो हमारा ध्येय है वो हमसे बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है। तो उन्होंने एक उसका उदाहरण दिया कि जब राजा थाईलैंड के पुराने राजा जो बहुत भिक्षुओं के प्रति जिनका बड़ा आदर था और वो खुद भी भिक्षु बाट बनाना चाहते हैं कुछ समय के लिए, तो और वो संघ के पैटर्न माने जाते थे। तो वो इंग्लैंड गए थे तो बीबीसी ने उनका बड़ा इंटरव्यू लिया था, तो उसमें एक सवाल उनसे ये भी पूछा गया कि जो ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपका क्या विचार है जो क्रिश्चियनिटी में है। तो उन्होंने कहा कि वो काफ़ी उनको समझ नहीं आया क्या करना है। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, हम तो ओरिजिनल प्योरिटी की बात करते हैं। तो जब हम ये देखें, ये दो जो तरीके हैं सोचने के बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड व्यू हैं, और उससे साधना की तरीके, साधना करने का भाव ही बदल सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कोई ध्येय नहीं है, ध्येय तो है ही, दुख मुक्ति का ध्येय तो है ही है, लेकिन हमें ये भ्रम नहीं है कि हमारा जो चित्त है वो बिल्कुल हम गए गुजरे हैं, हम में कुछ बहुत भारी कमी है और हमको वो कमी दूर करनी है। अगर हम समझते हैं कि कुछ आगंतुक विकार आ गए थे और हमने उनको ठीक से हैंडल नहीं किया, वो आके घर पे बैठ गए हैं, गेस्ट जो हैं घर पे रह गए, हमको उनको देखना चाहिए, ठीक से समझना चाहिए। एक और बात की उन्होंने कि इस तरह की जो टीचिंग को भी डिफरेंट लगती है, हमको इसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए काफ़ी गहराई से, और ताकि हम समझ सकें इसको ठीक से, और फिर उचित लगे तो उसको अनुभव में उस तरह से साधना को बदल सकें। और क्योंकि भगवान ने हमेशा हमें अनुभव के आधार पे एक्सेप्ट करने की बात कही है, और अनुभव का आधार एक्सेप्ट करने का आधार क्या है कि क्या ये हमें दुख मुक्ति की ओर ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। उन्होंने फिर समझाया कि जैसे हम साधना करते हैं, धीरे धीरे मन शांत होता है, और कितनी देर शांत रहता है, थोड़ी देर में फिर कुछ ना कुछ करने का मन करता है, राग और द्वेष से प्रेरित साइकिल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो हमको अपने जो विकार हैं उनके साथ ठीक से काम करना भी सीखना चाहिए। तो फिर उन्होंने एक और उदाहरण के रूप से समझाया ये जो सोर्स ओरिएंटेड प्रैक्टिस का, कि ऐसे चांद है या सूर्य है, वो तो खुद अपने में चमकदार हैं, लेकिन बादल आ जाते हैं तो ढक जाते हैं। बादलों के आने से सूर्य की या चंद्रमा की चमक खत्म नहीं हो जाती, लेकिन वो ढक जाते हैं। तो इसी तरह से विकारों के आकर हमारे चित्त की शुद्धता ढक जाती है, ख़त्म नहीं होती है। तो इसलिए हमको विकार आ गए इस बात को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। समझदारी से उनको हैंडल करना है, सतीपन्या से, और उनको जाने देना है। तो उन्होंने बताया किस तरह से इस पे प्रैक्टिस पे काम करना है। तो उन्होंने फिर याद दिलाया कि ये सारी बातें अजान मन के जो फॉरेस्ट ट्रेडिशन है उनके अपनी साधना से उपजी हैं, क्योंकि जब भी जो अजान मन थे उनके अनेक अरहंत शिष्य हुए, जिनमें अजान महाबुआ, अजान चाल, उनको अर्जुन, कई सारे हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी शिक्षा का में एक बात जो उन्होंने समझाई थी अजान चाह को भी, कि जो चित्त है और उसके जो कंटेंट्स हैं उनको डिफरेंट करना सीखो। चित्त जब चित्त के जो चेतसिक हैं उसके साथ मिक्स हो जाते हैं तो हम देख नहीं पाते कि चित्त जो है शुद्ध जानकारी और उसके अंदर जो विकार हैं उनको अलग से देख नहीं पाते। तो हमारा अभ्यास ये होना चाहिए कि शुद्ध चित्त को देखने का और उसके अंदर आए जो कंटेंट्स हैं उनको अलग से देखने का अभ्यास करें, क्योंकि शुद्ध चित्त तो जो सोर्स है वो उसका शुद्ध नेचर तो यही है कि शांत है, बहुत सजग है और रेडिएंट है। और जो चेतसिक हैं वो एक तरह के मन के मूड हैं, कभी प्रिय जगत, कभी राग जाग रहा है, कभी द्वेष जाग रहा है, कभी बेचैनी जाग रही है, कभी कन्फ्यूजन जाग रहा है। और हम चाहें तो कभी हमको अपने मूड्स को जस्टिफाई भी कर देंगे कि वो भय जाग रहा है इस कारण से, एंग्जाइटी इस कारण से। वो हो सकता है वो ठीक भी हो, बुद्धि संगत हो या ना भी हो, लेकिन भगवान अजान मन कहते हैं कि उस पछड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमको जानना चाहिए कि ये बात जो है शाश्वत है, चित्त जो है हमारा रेडिएंट है, और जो दूसरी बात है वो नित्य है, वो बदलती रहती है, कभी कुछ कंडीशन कभी कुछ कंडीशन। तो इसको अगर हम ठीक से समझ लें तो फिर हमारा साधना का दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर उन्होंने लुंगपो डून की भी एक बात की, चाहे उन्होंने किस तरह से 4 आर्य सत्यों का रिफॉर्मुलेशन किया, जो हम कई बार सुन चुके हैं लुंगपो सुमेधो से भी, कि मन हमारा चित्त जो है अगर बाहर चला जाता है
और बाहर जाएगा किस कारण से, राग या द्वेष के कारण से, तो वो दुख का कारण है, और जो उसका बाहर जाने का एक्सपीरियंस है वो दुख है। और चित्त जब अपने आप में समाहित हो जाता है, चित्त को जानता है, तो वो दुख मुक्ति का मार्ग है, और उसका जो अनुभव है वो दुख के निरोध का अनुभव है। तो इस तरह से उन्होंने समझाया कि जो चित्त का बेस, उनका भी यही उद्देश्य था कि बेसिक जो चित्त का नेचर है वो शुद्ध चित्त है, अवसर चित्त है, और वो जब बाहर चला जाता है और इधर उधर अटक जाता है तो वो दुख का कारण बनता है। अंत में उन्होंने बताया कि इस तरह की साधना के लिए हमारे में त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे उन्होंने कहा कि पश्चिमी पाश्चात्य कल्चरल कंडीशनिंग में फेथ नहीं है, कि और ख़ासतौर पर इंग्लिश लैंग्वेज में फेथ और बिलीफ को एक ही बना दिया गया, लेकिन भगवान की शिक्षा में ऐसा नहीं है। बिलीव जो है वो किसी कॉन्सेप्ट में है, किसी मेटाफिजिकल चीज़ में है जो कि आप नहीं जान सकते, जबकि फेथ ऐसा है जो हमारा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, श्रद्धा है उसमें, जिसको कि हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा और धर्म के प्रति श्रद्धा, कि जो उनकी टीचिंग है वो संदिग्ध को है तो अभी तुरंत हमको एक्सपीरियंसेबल होनी चाहिए, अकाली को है तो हमेशा बनी रहेगी। अनिच्छा दुख अनात्ता जो है आज से 2000-2500 साल पहले भी सत्य थे, आज भी हैं, और 2500 साल बाद भी सत्य होंगे। तो इसलिए जब हमें कॉन्फिडेंस होगा बुद्ध की शिक्षा पे और धम्म की शिक्षा पे, तो ही हम सचमुच में इस बात को ठीक से एक्सेप्ट कर सकते हैं और फिर उस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने फिर जोड़ा कि इसका मतलब ये नहीं पानी में गंदगी है तो हम उसको पी लेंगे, उसको शुद्ध करने की आवश्यकता रहती है, लेकिन वो सती पन्या के आधार पर करते रहते हैं। लेकिन बेसिक हमारा एटीट्यूड बदल जाता है कि वो पानी की गंदगी को हम अलग से देखते हैं, अब पानी को अलग देखते हैं, और उसी से अहम का भाव कम होने लगता है साधना में, और साधना उत्तरोत्तर प्रगति करती है। हम 2 मिनट शांत रह के फिर उपेक्षा भावना का अभ्यास करेंगे। का ब्रह्म विहार सभी ब्रह्म विहारों का बैलेंस करने वाला सिरमौर उनका एक तरह से। उसका डिस्क्रिप्शन भगवान देते हैं, पुट्टस्य लोक धम्मे चित्तं यस्य न कंपति। लोक धम्मों के स्पर्श से चित्त का कंपायमान न होना, इसी को उपेक्षा भावना कहते हैं। हमारा स्पर्श यश से हो, अपयश से हो, प्रशंसा से हो, क्रिटिसिज्म से हो, लाभ हो, हानि हो, सुख हो, दुख हो, हर परिस्थिति में मन की समता बनी रहे, ये उपेक्षा भावना है। और वो तभी संभव होता है, जैसे एक और रतन सूत्र की गाथा भगवान बताते हैं, यो अर्य सच्चान अविच्च पश्यति। सो उसकी उपमा वो देते हैं, वही यथ इंद्र खीलो पथविन सितोसिया चतुभिवाते असंपकंपियो। जैसे एक खंबा जमीन में गड़ा हुआ, किसी भी तरह से हवा आ जाए वो हिलता नहीं है,
सो उपमा सत्पुरुषम वदामि, वही उपमा उस पुरुष की देते हैं जो 4 आर्य सत्यों में निरंतरता से उनका साक्षात्कार करता है, उनको अनुभव करता है। तो भगवान ने मार्ग भी बताया और क्या क्या करना है वो भी बताया, क्या अचीव किस तरह का मन की स्थिति उपेक्षा कहलाती है वो समझाया, और क्या उसका आधार बनता है 4 आर्य सत्यों का जानना। तो ये लोकोत्तर सम्मादिष्टि कहलाई जाती है, और लौकिक सम्मादिष्टि हमारे कर्म सिद्धांत को जानना, उससे भी काफ़ी हद तक हमें चित्त को शांत करने में मदद मिलती है, ख़ास तौर पे जब हमारे को अप्रिय परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा हो और उसके अपरेंट कॉज भी उपलब्ध हों। तो अपरेंट कॉज जो है, जो उसके कारण बन गए हैं, कोई वस्तु व्यक्ति, उनके प्रति द्वेष जागना भी स्वाभाविक हो जाता है। तो उसके एंटीडोट के रूप में भगवान ने समझाया कि हमें कर्म सिद्धांत को याद रखना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा विपाक चित्त आता है वो हमारे अपने कर्मों का फल है। तो इसलिए उपेक्षा भावना की शुरुआत कर्म सिद्धांत को याद करके करते हैं। कर्मस्य का कर्मदायादा कर्मयोनि कर्मबन्धु कर्मपटिसरण यं कर्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। जैसे भी मैं कर्म करूँगा, कल्याणकारी या पापकारी, उनका उत्तराधिकारी, उनके फल का उत्तराधिकारी मैं बनूंगा ही, अवश्यंभावी है। तो हमारा अपना मन अगर समता में स्थापित ना हो तो उसको इस आधार पे समता में लाने का प्रयास करते हैं। और इस समता भावना को सारे शरीर में व्याप्त होने का समय देते हैं थोड़ा। मन ही मन ये भाव करते हैं अपने जानने वालों के प्रति कि वे भी समता में पुष्ट हों, 4 आर्य सत्यों को समझ सकें, दुख का कारण को ठीक से समझें कि दुख का कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है, हमारी तृष्णा है। और जो इस समय दुख का प्रकटीकरण हुआ है वो हमारे कर्मों का ही फल है, ऐसा समझ के भी चित्त को समाहित करें, चित्त को उद्वेलित न होने दें। तो ऐसी शुभकामना सभी लोगों के प्रति जिनको हम जानते हों कर सकते हैं। जैसे जैसे चित्त में समता भाव पुष्ट होता है, शरीर में भी उसका प्रादुर्भाव होने लगता है। तो थोड़ी देर चुप शांत होके अवसर देते हैं चित्त में उपेक्षा भाव पुष्ट होने का, उसके तरंगे आने का।
तरंगों को अपने सामने की दिशा में फिर व्याप्त करते हैं और फिर रोज़ की भांति भी 10 दिशाओं में व्याप्त करने का अभ्यास करते हैं, या यूँ कहूँ कि उनको व्याप्त होने की अनुमति देते हैं। अपनी तरफ से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जिस हद तक वो फैलती हैं उनको फैलने देते हैं। तो भगवान की वाणी याद करते हैं। उपेक्षा सहगतेन चेतसा एकं दिशं परित्वा विहरति। तथा द्वितीयं तथा तृतीयं तथा चतुर्थं। तथा द्वितीयं तथा तृतीयं तथा चतुर्थं इति ऊर्ध्वम् अधोतिर्यं सब्बदी सब्बतताय सब्बावन्तं लोकं। उपेक्षा सहगतेन चेतसा विपुलेन महद्गतेन अपमानेन अवैरेण अव्यापज्येन भरित्वा विहरति। पहले एक दिशा में, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर उनके बीच की दिशाओं, फिर नीचे की दिशा, ऊपर की दिशा, 10 दिशाओं में सभी लोगों के, प्राणियों के प्रति और अपने प्रति उपेक्षा भाव, सभी दिशाओं को उपेक्षा भाव के तरंगों से व्याप्त करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो हम विपुल महान असीम उपेक्षा के साथ द्वेष रहित चित्त से, वैर रहित चित्त से सारी दिशाओं में उपेक्षा को व्याप्त करने का अभ्यास कर रहे हैं। हर दिशा में अपने जानने वाले लोगों को याद कर सकते हैं, या वहाँ उस दिशा में अनजान लोग जो बीमार हैं, दुखी हैं, उनका मन में चित्रण करके, अस्पतालों का चिंतन करके कि वहाँ जो भी लोग हैं सब समता में रहें, दुख के कारणों को समझ पाएं, चित्त शांत रहे।
समापन करते हैं सम्यक दृष्टि की भावना से कि सब सुखी हो, सब ठीक से देखें सत्य को, ताकि कोई गलत काम न करे। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चकेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा कञ्चित् पापमागमः, मा कञ्चित् शोकमागमः, मा कञ्चित् दुःखमागमः। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु मे। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। पन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि।